हेलो मित्रों, स्वागत है तमारू फ्री एक आजना वीडियोनी अंदर। मित्रों, आजना वीडियोनी अंदर आपणे जोवाना छे पीएम किसान योजना 2025 विषे, जेमां पीएम किसान सन्मान निधि योजना 2025 में 21मो हप्तो जाहिर थशे टूंक समयनी अंदर। साथ ज काले आपणो प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधि योजनानो 20मो हप्तो आवी गयो छे। घणा बधा खेडूत मित्रोने अहींया 4000 रूपियानो हप्तो मळ्यो छे ने घणा बधा खेडूत मित्रोने 2000 नो हप्तो मळ्यो छे। साथे वात करीए तो आवनारी 27 तारीख पछी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधि योजनानो 21मो हप्तो पण खेडूतोने मळी जशे। तो केवा खेडूतने 2000 नो हप्तो मळ्यो छे ने केवा खेडूतने 4000 नो हप्तो मळ्यो छे ने घणा बधा खेडूत मित्रो एवा छे के जेमने हजू सुधी हप्तानो लाभ मळ्यो नथी। तो जे पण खेडूत मित्रोने हजू सुधी 20मा हप्तानो लाभ ना मळ्यो होय ए आ विडियोने एंड सुधी जोता रहेजो। आ विडियोनी अंदर हुं जे तमने सोल्यूशन आपो ए करवाथी तमारो प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधि योजनानो 20मो हप्तो तरत ज आवी जशे। तो आ विडियोने तमे एंड सुधी जोता रहेजो। विडियो तमने पसंद आवे तो विडियोने एक लाइक करजो। तमे आपणी आ चेनल उपर नवा होय तो चेनलने सब्सक्राइब करी लेजो ने कमेंट करीने खास जणावजो के आपणो आ विडियो तमे कया गाममांथी अने कया जिल्लामांथी जोई रह्या छो, जेथी करीने आपणने पण खबर पड़े कि आपणो आ विडियो आ गाम आ जिल्ला सुधी पहोंची रह्यो छे। तो विडियोनी जे छे हवे आपणे शरूआत करी लईए। तो सौप्रथम अहींया वात करीए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए काले एटले के 2 ऑगस्टना रोज पीएम किसान सन्मान निधि योजनानो 20मो हप्तो जाहिर कर्यो हतो। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काले 2 ऑगस्टना रोज पीएम किसान सन्मान निधि योजनानो 20मो हप्तो जाहिर करवामां આવ્યો હતો। पीएम मोदीए उत्तर प्रदेशना वाराणसीना 9.7 करोड़ खेडूतोना खातामां 20મા हप्ताना जे छे 20મા हप्ता तरीके 20.84 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर कर्या छे। मित्रों, वाराणसीथी आपणो पीएम किसान सन्मान निधि योजनानो 20मो हप्तो जाहिर करवामां આવ્યો અને ત્યાંથી લગભગ 9.7 करोड़ खेडूतोने आ योजनानो लाभ आपवामां આવ્યો। साथ ही बात करें तो 20મા हप्तानी भेट रूपे जोवा जईए तो 20.84 लाख करोड़ रुपया એટલે કે 20.84 करोड़ रुपया जे छे तमाम खेडूतोना बैंक खातामां मोकली देवामां आवे छे। पण हजू सुधी घणा बधा खेडूत मित्रो एवा छे के जेमने हप्ताना 2000 रूपियानो लाभ मळ्यो नथी। वात करीए हवे आगळ तो अगाऊ पण 24 फेब्रुआरी 2025 ना रोज पीएम किसान सन्मान निधि योजनानो 19मो हप्तो जारी करवामां આવ્યો હતો। ત્યારબાદ 9.8 करोड़ खेडूतोना बैंक खातामां 22,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर करवामां આવ્યા હતા। મિત્રો જે 19મા हप्तानु અને 20મા हप्तानु कॉम्बिनेशन करवामां आवे तो 19મા हप्ताना घणा बधा खेडूतोने लाभ मळ्यो હતો। એટલે કે 19મા हप्तामां વધારે પૈસા વેચવામાં આવ્યા હતા। આ વખતે જે છે ઓછા પૈસા વેચવામાં આવે છે કારણ કે ઘણા બધા મિત્રોનું ઈ કેવાયસી બાકી હતું, આધાર બેંક એકાઉન્ટ સેન્ડિંગ, લેન્ડ સેન્ડિંગ, ડીબીટી, ફાર્મર આઈડી કાર્ડ, જમીન વેરિફિકેશન ઘણા બધા કાર્યો ઘણા બધા ખેડૂતોના બાકી રહી ગયા હતા, જેથી કરીને આ વખતે ઘણા બધા ખેડૂતોને એ હપ્તાથી બાકાત રાખવામાં આવે છે અને વંચિત રાખવામાં આવે છે। આ યોજના હેઠળ દર વર્ષે 3 હપ્તામાં ખેડૂતોના ખાતામાં 2000 રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે। મિત્રો, આ યોજના થકી ખેડૂતોના ખાતામાં વર્ષે 3 હપ્તા જાહેર કરવામાં આવે છે અને મોકલવામાં આવે છે। એટલે કે એક હપ્તો 2000 નો હોય છે એવા વર્ષની અંદર 3 હપ્તા એટલે કે 6000 રૂપિયાની આર્થિક સહાય પીએમ કિસાન યોજના થકી આપણા દેશના ખેડૂતોને આપવામાં આવે છે। પહેલો હપ્તો એપ્રિલથી જુલાઈની વચ્ચે આવે છે, બીજો હપ્તો ઓગસ્ટથી નવેમ્બરની વચ્ચે આવે છે અને ત્રીજો હપ્તો ડિસેમ્બરથી માર્ચની વચ્ચે ચૂકવવામાં આવતો હોય છે। તો આ રીતે આખી હપ્તાની પેટર્ન છે અને આપણા દેશના તમામ ખેડૂતોને આ રીતે આ યોજના થકી લાભ આપવામાં આવતો હોય છે। જો હપ્તો ના આવ્યો હોય તો શું કરવું? ઘણા બધા ખેડૂત મિત્રોની એ પણ કોમેન્ટ આવતી હતી કે હજુ સુધી પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાના 20મા હપ્તાનો લાભ મળ્યો નથી, તો હપ્તો ના આવ્યો હોય તો શું કરવું? तो जो तमने आ योजना नोंधणीना कोई समस्या आ योजना में नोंधणी कोई समस्या आवी रही है अथवा तमारे जे हप्ता ने लगती कोई पण समस्या है अथवा अन्य कोई सवाल है तो तमे तमारी पीएम किसान सन्मान निधि योजना की सत्तावार वेबसाइट पर जईने फार्मर कॉर्नर पर हेल्प डेस्क पर जईने तमे जे आनी मदद मेळवी शकशो। एटले के सौ प्रथम तमारे हेल्प डेस्क पर क्लिक करवानुं छे। आ पछी तमारे अहींया तमारो आधार कार्ड नंबर दाखल करवानो छे, त्यार पछी एकाउंट्स नंबर दाखल करवानो छे अथवा तो फोन नंबर दाखल करवानो छे। त्यार पछी तमने जे विगतो मेळवो ए बटन पर तमारे क्लिक करी लेवानुं छे ने क्वेरी फॉर्म देखाशे। अहीं एकाउंट्स नंबर, चूकवणी, आधार अने अन्य समस्याओं संबंधित विकल्पो ड्रॉप डाउन में आपवामां आवे छे। तमारी समस्या अनुसार तेने पसंद करवानुं छे ने तेनी विगतो नीचे लखवानी रहेशे। એટલે કે તમારી જે પણ સમસ્યા હોય, હપ્તો ના આવ્યો હોય, હપ્તો અટકી ગયો હોય, એ તમારી સમસ્યા પસંદ કરવાની છે। ત્યારે પછી જે નીચે વિગતો માંગી હોય તમામ વિગતો તમારે ભરવાની છે। આ પછી હવે તેને સબમિટ કરવાની છે। યોજનાના લાયકાત લાભાર્થીને કોમર્શિયલ सर्विस सीएससी सेंटर द्वारा पण पोतानुं रजिस्ट्रेशन करावी शके छे। आ उपरांत राज्य सरकार द्वारा योजना माटे जे छे निमणूक करायेल स्थानिक पटवारी महसूल आधारित अने जे छे नोडल अधिकारी पासे खेडूत नोंधणी जे छे करावीने हप्तानो लाभ लई शके छे। तो आजनो आ विडियो आपणे अहींया पूर्ण करीए छीए। विडियो तमने पसंद आव्यो होय तो विडियोने एक लाइक करजो। आपणे आ चेनल उपर तमे नवा होय तो चेनलने सब्सक्राइब करी लेजो अने कमेंट करीने खास जणावजो आजनो आ विडियो तमने केवो लाग्यो। मळीशुं આગળના વિડિયોમાં, ત્યાં સુધી जय भारत, जय हिंद।